Hey everyone and welcome to my channel. I'm Anusha and thanks for joining me. So today is a video about my signature no makeup look जो काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है. इसमें मैं कोई भी फाउंडेशन मैंने अप्लाई नहीं किया है, so don't worry about it कि फाउंडेशन के लिए मेरी स्किन ग्लोइंग लगेगी नहीं, क्योंकि इसके अंदर कुछ ट्रिक्स है जो आप फॉलो करेंगे तो आपकी स्किन भी ग्लोइंग लगेगी. एंड दिस मेकअप लुक इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप. अगर आपकी स्किन ऑयली है तो उसके लिए भी मैंने ट्रिक्स बताऊंगी इस वीडियो के लास्ट पे. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है इस चैनल पे. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. सो फॉर नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, दिस इज माय स्किन, दिस इज माय बेयर फेस बिफोर द मेकअप. एंड मैंने फेस पर भी कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, सिर्फ फेस वॉश से मेरे फेस को क्लीन किया है. सो मैं जब भी मैं पर्सनली मैं मेकअप करती हूँ तो मैं ज़्यादा कुछ प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि आई लव मिनिमल प्रोडक्ट एंड मैं चाहती हूँ कि मेरी स्किन नेचुरल लगे. तो दैट्स व्हाई मैं आज बहुत ही कम प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी. आई होप आप लोगों को भी बहुत ईजी आएगा इस मेकअप लुक करने के, क्योंकि ये मेकअप लुक मैं बहुत ही क्विकली करती हूँ एंड आई गेस आप लोगों के लिए भी ये बहुत ही हेल्प रहेगा. तो सबसे पहले मैं यूज़ करती हूँ द बायोटिक कुकुम्बर टोनर. एंड मेरी स्किन बहुत ही सेंसिटिव है, सो दैट्स से मैं कॉटन पैड से यूज़ नहीं करती हूँ. मैं हाथों पे ऐसे लेके फिर हाथों पे मैं मिक्स करके डैबिंग मोशन पे मेरे फेस पे मैं अप्लाई करती हूँ. देन मैं मेरे फेस पे अप्लाई करती हूँ द सीरम. एंड मैं यूज़ करती हूँ द लॉक मिक्सीफाई सीरम. मैं इस सीरम को मेरे लिप पे भी अप्लाई करती हूँ. देन फॉर माई ज़ॉम्बी आईज मैं यूज़ करती हूँ द लॉरियल हाइड्राफ्रेश एंटी ऑक्स आई जेल. मैं सबसे पहले इसको मेरे रिंग फिंगर पे लेती हूँ इस तरह से, जस्ट अ लिटिल क्वांटिटी. देन दोनों फिंगर पे ऐसे अप्लाई करके मेरी अंडर आई पे मैं इसको अप्लाई करती हूँ. ओके, नाउ फॉर द मेन पार्ट. एंड ये पार्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत कुछ अभी मिक्स करने वाली हूँ. सो एट फर्स्ट मैं ले रही हूँ मेरी हाथों पे बायोटिक मॉर्निंग नेक्टर लोशन. मैं पहले मेरे हाथों में इसको ले रही हूँ. मैं इसको इस क्वांटिटी में ले रही हूँ. देन मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ द मेबेलिन मास्टर प्राइमर. इसको भी बहुत ही कम क्वांटिटी पे मैं लूँगी, मैं आपको दिखा रही हूँ. जस्ट दिस क्वांटिटी. देन मैं इसे मिक्स कर रही हूँ द मेबेलिन बीबी क्रीम. इसको भी मैं जस्ट 1 ड्रॉप यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ. डोंट वरी, दिस इज द लास्ट स्टेप. सो द Maybelline Master Strobing Cream. Just this quantity. So guys, this is my mixture. मैं अभी इसको मिक्स करके आप लोगों को दिखाऊंगी. मैं इस सब प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से मेरे हाथों पे ब्लेंड करूंगी. It's a very liquid formula. So now you can see the shade. Then मैं इसको मेरी फेस पे अप्लाई करूँगी डॉट डॉट पे, पूरी फेस पे. फिर मैं पूरी फेस पे इसको अप्लाई करूँगी. My under eye, my eyelids.
So guys, you can see the magic on my face. तो this is a trick मेरी glowing skin के लिए. अगर आप नाइट टाइम में जाना चाहते हो तो आप बीबी क्रीम के बदले में आप फाउंडेशन भी इस पे अप्लाई कर सकते हो. एंड इफ़ यू हैव ऑयली स्किन देन आप जो मॉइस्चराइजर यूज़ कर रहे हो तो वो कुछ जेल टाइप मॉइस्चराइजर आप यूज़ करेंगे तो आपका ऑयलीनेस ज़्यादा नहीं आएगा. तो आप उस पर मॉइस्चराइजर एंड सीरम को स्किप करके आप सिर्फ जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो. सो डोंट वरी अबाउट फॉर ऑयली स्किन. देन फॉर माई कंसीलर आई एम यूजिंग द Maybelline Age Wine Concealer, my all-time favorite. इसको मैं हाथों से ही ब्लेंड करती हूँ. Now to set this place जहाँ पे मेरी ऑयली होती है तो सो आई हैव कॉम्बिनेशन स्किन सो दैट्स वाई मैं मेरी जोन जहाँ पे ऑयली होती है वहाँ पे मैं पाउडर अप्लाई करती हूँ. आप लोगों की स्किन अगर बहुत ही ऑयली है आप पूरे फेस पे पाउडर यूज़ कर सकते हो. बट फॉर मी आई यूज़ अ लिटिल क्वान्टिटी एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग द रिमल स्टे मैट पाउडर. एंड इसको मैं मेरी एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूँगी. So for the contour, I'm using a natural finish contour. मैं ज़्यादा dark contour apply नहीं करूँगी. For that I'm using the Facestudio Pro second press powder and my shade is Beige 3. मैं इसको मेरी same fluffy brush के help से इसको apply करूँगी. Now for my eyebrows, I'm using the Facestudio Pro. Now moving on to the lip, and for the lip I'm using the Good Vibes Coconut Lip Balm, my all-time favorite. Now time for my tricks. एंड आप लोग अगर मेरी नो मेकअप लुक फॉर स्कूल और वर्क्स ये वीडियो देखा है जो लिंक है ऊपर तो उन लोगों को पता है कि मेरी ट्रिक्स विथ लिप बाम. So for that I'm using the Maybelline Baby Lips and my shade is Highline Wine. and मैं इसको क्या करूँगी, सबसे पहले मैं इसको अप्लाई करूँगी मेरे लिप पे. A little bit onto my cheeks, onto my eyelids. I know it's quite look funny. Then मैं इसको मेरे फिंगर से अप्लाई करूँगी.
पूरे आईलिड पे इस पिंक को मैं अप्लाई कर रही हूँ नेचुरल फिनिश के लिए। एंड आई हैव नेचुरली पिगमेंटेड आई विच आई लव। कभी कभी टाइम में इस पे लिप बाम अप्लाई नहीं करती हूँ, मेरी आईलिड के कलर को एज अ आई शेडो में यूज़ करती हूँ। नाउ फॉर द हाइलाइटर आई एम यूजिंग द सेम मास्टर स्ट्रॉबिंग क्रीम। इसको मेरी फिंगर पे जस्ट अ लिटिल बिट अप्लाई करूँगी, जस्ट दिस क्वांटिटी, अ टाइनी क्वांटिटी। एंड द लास्ट थिंग मैं जिसके बिना नहीं रह सकती, सो दैट इज द Maybelline लैश सेंसेशनल मस्कारा। Guys, this is the final look you can see right now. अगर आप लोग की स्किन ऑयली है तो आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हो इसके बाद, बट फॉर मी आई डोंट लाइक अ पाउडरी फिनिश और मैट फिनिश, सो मैं लाइक करती हूँ द ड्यूई फिनिश ऑन माई स्किन। दैट्स मेरी स्किन बहुत टाइम ग्लोइंग रहते हैं एंड ये मेरी स्किन पे बहुत देर तक रहते भी है। एंड मैं इसके बाद कभी जब बाहर जाती हूँ लॉन्ग लास्टिंग डे के लिए, ऑल डे के लिए, सो मैं इसके ऊपर एक सेटिंग स्प्रे अप्लाई करती हूँ जिसके लिए ये लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। सो यू कैन सी गाइस, दिस इज माई स्किन लाइक सो नेचुरल फिनिश। लग रहा है कि मैं फाउंडेशन भी अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन नहीं, विदाउट फाउंडेशन, विथ बेबी क्रीम। यू कैन यूज एनी टाइप्स ऑफ बेबी क्रीम यू हैव, और यू कैन यूज अ फाउंडेशन फॉर अ गुड कवरेज अगर आपकी स्किन पे बहुत सारे स्कर्ट्स है एंड बहुत सारे स्पॉट्स है। सो गाइस, दिस इज माय सिग्नेचर नो मेकअप लुक फॉर एवरी डे। सो गाइस, आई होप you enjoyed this video, and if this video is helpful for you, then please let me know in the comment section below. And if you want more tutorial like this, then please subscribe to my channel and hit the like button, and please click the bell icon for instant notification. And I will see you all in my next video. Bye.